Good evening, everyone. Welcome to the GATE Excel 2023 Zoology course. And in this course, we will be having 10 classes, as you all know. I will update the schedule in the group because some of you might not have known what is the exact schedule. They were asking me. So without wasting much more of the time, I'd like to just start off with today's class, and then I will request everyone just to pay attention in the class, and if you have any kind of query, we will have sessions for the discussions of those queries in detail. So let's just move into the slide. I am sharing the screen. So please type in the comment section whether the screen is visible or not, and I am properly audible or not. Then I would begin with the class. Please let me know in the comments box. Okay, audible, and is the screen visible to you? Okay, thank you, Akash. And so basically we would start off with today's class from here. So this is the GATE Excel Zoology crash course. Sorry, part should be 1, and here it is. So it is presented to you by the Advent Biological Society and TAPS Life Sciences. So at the beginning of today's class, we will be discussing something about the human developmental biology. Now, in perspective of GATE, there was a time in case of zoology, there was no questions which used to come from this exact section of developmental biology. But yes, for the last 2 years, that is 2021 and 2022, there have been questions which are generally being asked from the section of developmental biology, and gradually the number of questions are also increasing. Last year, in 2021, it was just a single question which was asked. In 2022, 2 questions came from this area of developmental biology, and now it might happen that in the next few years, or in this very GATE 2023, the number of questions may just go up a little further. So we have to focus on this, and that's why, as developmental biology is something which people do not exactly like to read at a single time, so I have just started with this developmental biology such that you all can get a bit of focus on dev bio. So the human embryonic development. So we all know that the human, please look at my screen and look at the cursor in the screen. You will find out that the human developmental biology, or the human embryonic development, begins when the sperms generally go and fertilize the unfertilized egg, and that is also known as the ova. Now you might know about this process. People from the background of zoology generally know, but yes, there may be some of you who might be from different background just opting for the zoology paper. So now, as we all know that these sperms have the capacity to fertilize this egg. Now please just focus on what I am saying in the class, because some things might not be in the slide, but you have to focus. You have to just jot those things down in your copy or somewhere else, that what I am exactly is focusing on, because it might happen that that is not in the slide, but question may come from that area which I am generally delivering inside the class. Okay, so these sperms are generally important when they are ejaculated by a male partner of a female. When the first process of ejaculation occurs, these sperms are generally important. But what happens is there is a bit of modification which takes place on this outer cell membrane, or the outer cellular layers of
the sperm. Exactly not cell membrane, but there are several cellular layers which are present in the sperm. You might be knowing of them. And these modifications cause the sperm to just get a bit modified. That means जो स्पर्म रिलीज हुआ था इनिशियली इजैकुलेशन के माध्यम से, वो स्पर्म अभी मैच्योर हो गया है. पहले इम्पोर्टेंट था, मतलब ये स्पर्म फर्टिलाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट था, फर्टिलाइज नहीं कर सकता था. लेकिन अब जो है ये स्पर्म डायरेक्टली जाके फर्टिलाइज कर सकता है. किसको फर्टिलाइज करेगा? ओवम को फर्टिलाइज करेगा. ओवम को अगर फर्टिलाइज कर देता है तो उससे जो होता है एक फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है. और वो फर्टिलाइज्ड एग का कोई पहली स्टेज में हम लोग उसको जानते हैं जाइगोट के नाम से. सो ये जो प्रोसेस है स्पर्म की मैच्योरेशन लाभ होने का, उस प्रोसेस का नाम होता है कैपेसिटेशन. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, कैपेसिटेशन. एंड व्हेनेवर दिस कैपेसिटेटेड स्पर्म goes further and it and only a single sperm, as you all know, gets fertilized into a unfertilized egg, fertilized with an unfertilized egg. And this single selection of a sperm is being generally does generally occur via the process of blocking to polyspermy, because multiple sperms cannot fertilize a single egg. Because if that occurs, then that situation would be known as polyspermy, and that would result in the formation of a egg which would be known as an polysperm or multiple sperm entry egg. Okay, that is a unnatural situation. So to prevent that, there are several blocks to polyspermy. In case of humans or mammals, there is only a single block to polyspermy, but in case of lower group of the invertebrates and lower group of the vertebrates, generally the vertebrates, another process that is known as the fast block to polyspermy is there, which is a bit of transient, but the next step, that is known as the slow block to polyspermy, is a permanent step. And this slow block to polyspermy is present in case of the mammals. Generally, in case of mammals, generally, I am again saying generally, exceptions are there, but yes, in case of mammals, there is no presence of the fast block to polyspermy. Okay, there are several exceptions where there are fast block to polyspermy in mammals, but in general case, there is no fast block to polyspermy present in mammals. Only the slow block to polyspermy takes place. And in that slow block to polyspermy, the most important reaction which occurs is known as the cortical granule reaction. So please remember this thing, cortical granule reaction. And due to this cortical granule reaction, the transient block to polyspermy gradually becomes a permanent block to polyspermy, and it prevents multiple sperm to get fertilized with the unfertilized egg and form a multi-sperm zygote. So one sperm comes in, one sperm enters this egg outer layer, and you know that there are several different layers which are present outside this egg. And whenever these egg layers are perforated by the sperm pronuclei only, so see this part, this head part only gets inside, and this head part, when it gets inside the egg, it fuses with the nucleus of the egg, and this part of this sperm comprises of the genetic material, and that is known as the pronuclei. So whenever the sperm pronuclei comes over here, it fuses with the pronuclei of the egg, that is the ovum. And whenever this happens, it is also known as the formation of the transient zygote, and from that stage what forms is the formation of the permanent zygote. And whenever a zygote is formed, zygote has a process of forming infoldings and divisions in itself, and that process in general is known as cleavage. So several rounds of this infolding, several rounds of cell division takes place inside this zygote, and whenever several rounds of cell divisions takes place, it would happen that this single egg which was there, it has got divided into two at this stage. So this is known as the two cell stage of the cleavage. This is the first cleavage. Okay, so this is the first cleavage which has taken place. See, there was a single fertilized zygote which was there, and there is a two cell zygote which is present, not zygote actually, two cell stage which is present. This is basically
not a zygote. Zygote is the primordial, that is the primitive or the most primary unfertilized or primary fertilized egg which is there. Okay, so this is the primary fertilized egg or the zygote, and then there is a first cleavage which results in the formation of the two cell stage of this fertilized egg, and then there is another round of division which gives rise to the four cell stage. After the four cell stage there is the 8 cell stage. That means there is a bit of binary division that is going on. 2 to 4 to 8, then to 16, then to 32, then to 64, like this division is going on. And then what happens is there is the formation of the morula. So morula stage, generally it is being divided that 64 cell stage has been divided as morula, but yes, scientists differ in saying that, because they say that nowadays they say that 32 to 128 or beyond may come under this process that is known as the morula. Now morula is a stage. See over here, you can see over here a ball of cells that is present, and whenever in this ball of cells a vacant area or a hollow area forms inside. So if you cut this, egg, or if you not this egg, actually it is not an egg, it is a ball basically. If you cut this ball from the sidewise, you can find over here that a vacant or a hollow area is present over here. That hollow area is known as the blastocele cavity, and that blastocele cavity, when this blastocele cavity comes into effect, that stage is known as the blastula, and it is just followed by the morula stage. So after the blastula, this internal cell lining starts to cause infolding inside. So here would be like this kind of infolding, like this. Okay, for the formation of what is known as the mouth or the anus, like in the formation of the archenteron. So whenever this starts, the process which sets in is known as the gastrulation. So from the blastula stage, whenever the proper infolding starts, that process is known as the gastrulation phase. So in this gastrulation phase, what happens is that this internal cell lining starts just doing what is known as a process of invagination. Okay, the first process, I will be talking about this morphogenetic movements in details in the next or the upcoming slides. You will find those out, but this process at the beginning is known as invagination. That means curving in of this internal cell line. And what would happen, see this cell layer, it has infolded, and this process, this cell stage is known as the early gastrula stage. The middle cell layer would be known as the mesoderm, and the outer cell layer would be known as the endoderm. So endoderm is the inner cell layer, the middle cell layer is the mesoderm, and the outer cell layer is known as the ectoderm. So these are the three cell layers which forms after the process or during the process of gastrulation. And then what is formed is known as the gastrula. You can find over here, this is the late gastrula and the proper gastrula actually. Here is the ectoderm, here is the mesoderm, and here is the endoderm. This layer is the endoderm. And you can find over here that there has been a cavity which has been created, and this area from where actually the gastrulation process starts. So you can see over here, look at the cursor, see over here, this area from where gastrulation starts is known as the blastopore lip. So the place from where gastrulation originates is known as the blastopore lip, and from that there is a cavity which is formed at the end of gastrulation, and that is known as the archenteron cavity. And there are two types of phases which may arise after the archenteron cavity forms in, that is from the archenteron a direct head may form, or from the archenteron a direct anus may form, and these two openings would give rise to the type of organism that is formed generally in case of the lower group of invertebrates. So that is a different thing over here. So human embryonic development, the first is zygote, then there comes morula, then there comes blastula, then there comes the gastrula phase. So in this way we have looked into the basics of the human embryonic development. I hope this is clear. If you have any further queries, we would be discussing at the end of the class. So I have just jotted this down, the process of cleavage during embryonic development. Zygote, first cleavage, and this cleavage phase is known as the holoblastic cleavage. Holoblastic cleavage, that means holoblastic cleavage means
cleavage without interference from the egg yolk. Okay, so without the egg yolk, it comprises of a bit of egg yolk, but the egg yolk doesn't interfere into the process of cleavage, and a complete cleavage occurs through the cleavage plate. Okay, in case of holoblastic cleavage, a complete cleavage occurs through the cleavage plate. So you have got two cells at a time. So these cells, these small cells which are present over here, that are known as the blastomeres. Okay, and these small cells are known as the blastomeres, and these large cells at the beginning, these are known as these big cells at a time are known as the blastocysts. Blastocysts, cysts, blastocysts. Then when these cells start growing, when this cell starts dividing and their size gradually reduces, these cells are known as the blastomeres. Okay, blastocysts to blastomeres. So these are the blastocysts which are present over here. Then there are the stages where there is the spore cell stage, then there is the transitional stage, then there is the 8 cell stage. This 8 cell stage is also known as the morula. Debates have been there that it is differing between 32 to 128 even at a time. Different books would be having different thing, but you have to remember that it might be between 8 cell stage, it might be between 32 to 128 cell stage. Question may come from anyone because you do not know who is setting the question. So you have to keep in mind these multiple concepts at a time. Now there is the blastula stage, then there is the gastrulation process which goes on. 3 germ layers of the cellular layers that are also known as the germ layer form at this time, formation of the gastrula, and this gastrula develops into the what is known as the complete embryo. Okay, so in this way the process of embryonic cleavage or cleavage during embryonic development in case of mammals take place. So let's just look into the types of cleavage which are there. First type of cleavage is the holoblastic cleavage. I have already mentioned complete cleavage. Okay, so holoblastic cleavage again can be subdivided into 2 types. One is the isoleucithal cleavage, another cleavage type is known as the mesoleucithal cleavage. So in case of isoleucithal cleavage, the egg yolk, you know about the egg yolk because the egg yolk is present inside an egg. Now that egg yolk is generally, in case of what you eat daily, that is the chicken eggs, they have a yellow colored egg yolk, and that is a huge amount of yolk that is present, right? So in case of humans, that type of yolk is generally not humans, I'm not talking about humans at this stage, I'm just talking about in case of isoleucithal cleavage, this yolk is distributed throughout the egg. That means this yolk is not directly causing a hamper to the process of cleavage. So this yolk is sparsely distributed. Okay, sparsely, that means very less, but it is distributed, and it is distributed. That process is known as that type of cleavage is that type of eggs which comes under this holoblastic cleavage are known as the isoleucithal eggs. So isoleucithal eggs have 4 types of cleavage in general: radial, spiral, bilateral, and rotational. Rotational cleavage is important. Questions have come from rotational cleavage in various types of competitive exams, including GATE. And rotational cleavage is important because rotational cleavage takes place in case of humans. Then there is another thing that is known as the bilateral cleavage. It takes place in case of the tunicates. Then there is spiral cleavage. Annelids, mollusks, flatworms show spiral cleavage. And then there is the radial cleavage. The echinoderms and amphioxus, they show the radial cleavage. Now radial cleavage is shown by the echinoderms. Yes, that is true, but it happens that echinoderms are adult, or when these echinoderms become adult, they show radial cleavage, but when they are in their larval forms, they show bilateral cleavage. So difference is there again.
radial, spiral, bilateral, rotational. Please remember these terminologies if you can, because question may come from these areas in details. Okay, like you might be asked, annulate show which of the following types of cleavage, and they would be giving you spiral holoblastic cleavage, spiral other types of cleavage. I will be talking about it later because I haven't gone through this mesolithical or this meroblastic cleavage. After coming, then I would be going to the questions. So mesolithical, then another type is also known as mesolithical egg. So what is there in the mesolithical egg? Now in this mesolithical egg, there is the moderate yolk distribution. Okay, so the yolk is distributed, or the yolk is present in a moderate amount or moderate quantity. And this type of eggs, there is a bit of hamper to the process of cleavage, but yes, in spite of the hamper to the process of cleavage due to the presence of yolk, this type of cleavage is a complete cleavage and is also known as the holoblastic cleavage. Under this type, only a single type of cleavage is there, that is known as the radial mesolithical radial cleavage, mesolithical radial holoblastic cleavage, that is present in case of the amphibians. Okay, in case of amphibians, mesolithical radial holoblastic cleavage is there. Next type, that is known as, we were talking about the holoblastic type where there was a complete division, and now the next type that is completely opposite to the holoblastic cleavage is known as the meroblastic cleavage. Now in this meroblastic cleavage, there is an incomplete cleavage due to the presence of the huge amount of yolk which is present inside this egg. Now this meroblastic cleavage, under this meroblastic cleavage, there which might be there. One is the telolecithal, another one is also known as the centrolecithal egg. Now in this telolecithal egg, what happens is that there is the presence of a dense amount of yolk throughout most of the cell. So most of the cell comprises of a dense amount of yolk. Okay, so there is a dense yolk that is present inside this egg, and as a result there is a hamper in the process of cleavage. Okay, just remember this thing. The example under this can be bilateral cleavage, bilaterally meroblastic cleavage, that is shown by the cephalopod mollusks. Okay, mollusks have a different type of order that is known as the cephalopods, and these cephalopods show bilateral meroblastic cleavage. There is another type that is present in case of fish, reptiles and birds, and very important one, that is the discoidal cleavage. Discoidal cleavage, discoidal meroblastic cleavage is present in case of fish, reptiles and birds. The last type is of very importance, that is the centrolecithal egg type, that is the yolk is present at the center of the egg, and thus there can be a superficial type of cleavage that might take place. And this type of cleavage, that is the superficial cleavage in centrolecithal egg, is present in most of the insects. So insects show centrolecithal cleavage. Please remember this thing, centrolecithal, please remember discoidal, please remember radial, and most importantly, please remember rotational holoblastic cleavage present in case of mammals. So this was in general a generalized classification of the process of cleavage. Please do not mark up these things what is present over here. Just remember what is what: radial cleavage, spiral cleavage, bilateral cleavage, rotational cleavage. Then again there is bilateral meroblastic. So please remember the difference between bilateral meroblastic cleavage and bilateral holoblastic cleavage. The difference lies in the word hollow and mero, because hollow means complete, mero means incomplete. So here is the difference actually, but otherwise the process of cleavage, the basics of cleavage is basically meroblastic and bilateral holoblastic type. But otherwise there is a bit of difference in hollow and mero words or terminology used. Okay, so this was the basics of the cleavage. So we have gone through the cleavage, and just we would try to answer this question. See, given over here, this was a question from 2022, multiple choice question, and it carries two
2 marks each. For each wrong answer there would be 2 out of 3 marks that would be deducted from your paper, from your question paper. This is generally there in the section 2 or section 3 of the question paper in case of zoology. See over here, question number 11. Match the terms in column 1 with specific descriptions in column 2. Please do not skip these questions, because you can just eliminate few options or few answers from over these options given over here, and you can easily answer this match the following type of question. So P over here is column 1, over here is column 2. So zygote, we have to find over here what is zygote. A hollow sphere of cells? No. Newborn offspring? No. Cells that result from fertilization. So that's very easy. Cells that result from fertilization is known as zygote. Then there is morula. So morula, a hollow sphere of cells. Then there is a newborn offspring, a cell that results from fertilization, an embryo, an unfertilized egg, a compact mass of cells. So basically this morula is a compact mass of cells. Okay, compact mass of cells, we have already seen. Then there is the blastocyst, a hollow sphere of cells. So I have already told you that hollow sphere of cells generally takes place in case of blastocyst. Okay, so blastocyst is the hollow sphere of cells. Then there comes the ovum. Okay, ovum is something which is unfertilized in nature, and here is an unfertilized egg. Then there comes neonate. So what is a neonate? Neonate is basically an offspring or a child which is just born. Just borns are also known as neonate. Okay, so a newborn offspring. And there is the fetus. Now you all know that fetus is an embryo. Okay, an embryonic condition of an offspring is known as the fetus. So P would be 3. Where is P3? See, A and D. So by just matching zygote with a cell that results from fertilization, you can eliminate B and C. You have to just choose between A and D. So that's why I am telling, please don't skip these questions. Please try to answer these questions correctly. If you can answer these questions correctly, I am assuring you that yes, you will get a good gate rank. Okay, you will get a gate rank below below 700. That is a very good gate rank, and that must be your target down there. Okay, so next one you can find out over here, morula. What I have said, this morula is a compact mass of cells. So let's see, in option number A, Q6, and option number D, again Q6. So we cannot distinguish between these. So blastocyst, we have said that a hollow sphere of cells, that is option number 1. R is 1. A, R is 1. इसका मतलब है R को 1 दिया गया है और R को 2. तो पहली 3 ऑप्शंस को देख के हम लोग ये पता कर सकते हैं कि A ही आंसर होगा. अदर्स भी देख लेते हैं. ओवम जो है वो अनफर्टिलाइज देखे, मतलब S5 है. S5 देखो, यहाँ पे भी S5 ही था. ठीक है, कोई बात नहीं, और भी देख लेते हैं. नियोनेट जो है, नियोनेट होता है कि नियोनेट जो है ये है न्यू बॉर्न ऑफस्प्रिंग. T जो होगा 2 होगा. T यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम तो अब श्योर हो चुके हैं कि यही होगा. U जो है, U देखो, फीटस जो होता है वो एम्ब्रायो होता है, जो मदर्स वूम में प्रेजेंट होता है, वो एम्ब्रायो को हम लोग फीटस के नाम से U4. So U4, U1. So the correct option here would be option number A. So this is a very easy question, and like this many questions would be given in the easy form. There might be some different types of tough column wise options which might be given, but you have to eliminate the options from this list. Okay, and you can get the correct answer. So match the following. Doing the match the following is very much easy. So now let's look at into the morphogenetic movements. Okay, so morphogenetic movement. So morphogenetic movement का मतलब क्या होता है? Morphogenetic movements का मतलब ये होता है कि जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है, उस गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में मॉर्फोजेंस नाम के कुछ केमिकल्स, मॉर्फोजेंस मतलब ऐसे केमिकल्स जो ग्रेडियंट पैटर्न को फॉलो करता है. मतलब ग्रेडियंट पैटर्न का मतलब है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन या फिर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही ग्रेडियंट होता है.
तो जो मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करके एक डिफ्यूजन पैटर्न को क्रिएट करते हैं, उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग मॉर्फोजेंस के नाम से डेवलपमेंटल बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जानते हैं। और मॉर्फोजेंस जो होता है, ये मॉर्फोजेंस गैस्ट्रुलेशन के फेज के दौरान जो करता है कि कुछ गैस्ट्रुलेशन इंड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सेस को एक्टिवेट कर देता है, और इससे जो होता है कि सेल जो यहाँ पे इंटरनल सेल लाइनिंग्स थे, वो सेल तरह तरह की मूवमेंट करना चालू कर देता है, और ये जो मूवमेंट होता है इनको ही हम लोग मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की क्लासिफिकेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्वेजिनेशन हो सकता है, इन्वोल्यूशन हो सकता है, इन्ग्रेशन हो सकता है, डिलैमिनेशन हो सकता है, एपीबोली हो सकता है। सो ये मेजर टाइप्स के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कुछ होते हैं, लेकिन वो लोग गेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो दिया है ये सारे गेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इन्ग्रेशन, डिलैमिनेशन, एपीबोली। सो इन्वेजिनेशन को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन्वेजिनेशन जो प्रोसेस है ये जनरली होता है इनफोल्डिंग ऑफ द सेल शीट इनटू द एम्ब्रायो। सो लुक ओवर हियर, द सेल शीट इज ग्रेजुअली इनफोल्डिंग इनटू द एम्ब्रायो। हियर इज द एम्ब्रायो एंड इट इज ग्रेजुअली इनफोल्डिंग into it, and that process is known as invagination. Then there is the process of so remember an example, that is sea urchin endoderm. Sea urchin endoderm को ये जो होता है इन्वेजिनेशन का प्रोसेस शो करता है। तो हमने जो प्रिमिटिव टाइप के मूवमेंट यहाँ पे देखे थे, ये जैसे मूवमेंट्स हो रहे थे, यहाँ पे आर्किनटेरॉन का फॉर्मेशन हो रहा था। ये प्रोसेस जो था, मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बोला था कि ब्लास्टोपोल लिप से जो प्रोसेस शुरू होता है उसको इन्वेजिनेशन के नाम से जानते हैं हम लोग। और इन्वेजिनेशन के अलावा भी और भी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, लाइक इन्वोल्यूशन, दैट इज टर्निंग इन ऑफ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर। तो ये जो होता है, यहाँ पे देखो, ये एक सिंगल सेल लाइनिंग था, और यहाँ पे अगर ऐसे कर्सर को ध्यान से ऐसे करके फोल्ड हो गया, ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसे करके फोल्ड हो गया, ठीक है। ऐसे करके अगर फोल्ड हो जाएगा, सी लुक ओवर हियर, ऐसे करके एक शीट बाहर था, उसके ऊपर नीचे से एक और शीट फोल्ड होके इंटरनली फोल्ड हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन मतलब टर्निंग इन ऑफ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर। आउटर लेयर बाहर था, आउटर लेयर के इनसाइड से एक सेल का शीट लाइक लेयर फॉर्म हो गया, मतलब सेल का शीट फॉर्म हो गया। तो ये इसका एग्जांपल है एम्फीबियन मेसोडर्म। एम्फीबियन मेसोडर्म में ये मूवमेंट देखा जाता है। देन देयर कम्स इन्ग्रेशन। इन्ग्रेशन का मतलब यहाँ पे जो सिंगल सेल्स थे, ये सिंगल सेल्स माइग्रेट करने लगे। सिंगल सेल्स मतलब यहाँ से जो पूरा ये एम्ब्रायोनिक इंटरनल लेयर था, यहाँ से सेल्स इंडिविजुअली माइग्रेट करने लगे, ठीक है, एक सेल्स करके माइग्रेट कर ले। तो इस प्रोसेस को इन्ग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इनटू द एम्ब्रायो, एंड दिस प्रोसेस इज सीन इन sea urchin, mesoderm, Drosophila neuroblast. So these are the examples. Okay. Then there is a process which is known as delamination. So delamination में जो होता है, स्प्लिटिंग होता है एक सिंगल शीट का। यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्स का स्प्लिटिंग हो रहा था, और यहाँ पे एक सेल शीट का स्प्लिटिंग हो रहा है। स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन शीट इनटू टू शीट। एक सिंगल शीट था, यहाँ से एक डबल शीट अचानक से हो गया, तो इसका हम लोग डीलैमिनेशन। यहाँ पे सिंगल सेल्स का मामला था, यहाँ पे जो हो रहा है ये जो है एक पूरा सेल शीट का मामला है। सो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग मैमेलियन एंड बर्ड हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन को भी यहाँ पे ला सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर कंफ्यूजन जो होता है वो एपीबॉली में ही होता है बच्चे को। सो द एक्सपेंशन ऑफ वन शीट ओवर द अदर सेल। सो लुक ओवर हियर, दिस इज बेसिकली embryo, and here is the expansion of one sheet over the other. Okay, one sheet is expanding over the other.
दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन में देखो यहाँ पे हो रहा था कि इंटरनली सेल अंदर से जा रहे थे, और यहाँ पे जो एपीपॉली में है यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे उसको घेर रहा है, इसको घेर रहा है, इट इज सराउंडिंग इट, दिस सेल शीट इज ग्रेजुअली सराउंडिंग इट। और ये इंटरनली हो रहा है, ये एक्सटर्नली हो रहा है। तो इस प्रोसेस को एपीपॉली के नाम से, एक्सपेंशन ऑफ सेल शीट ओवर अदर सेल, और ये टर्निंग इन होता है। सो एग्जाम्पल होता है एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन एम्फीबियंस, सी अर्चिन्स एंड ट्यूनिकेट। सो ऐसे ही करके मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जनरली चलते हैं इन केस ऑफ व्हाट इज नोन एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जहां पे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट चल रहे हैं। सो वी हैव लर्नड अबाउट द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। सो लेट्स जस्ट स्किप इनटू अनदर क्वेश्चन व्हिच केम फ्रॉम 2022। सो 2022 में देखो मैच द फॉलोइंग में ही दो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बहुत आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। So you can understand the importance. So I am also telling you another thing that from involution 2017 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। So अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स को गेट वाले बहुत पसंद करते हैं। So मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से क्वेश्चन आते रहेंगे। So इन्वेजिनेशन, ये जो प्रोसेस है ये किससे मैच करेगा? पी का जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन्वेजिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि इनफोल्डिंग हो रहा था, ठीक है, इनफोल्डिंग ऑफ अ शीट ऑफ एपिथेलियल सेल्स जो है ये फोल्ड हो रहे थे। देखो इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट इनटू एम्ब्रायो, और ये सी अर्चिन एंडोडर्म मतलब एपिथेलियल सेल्स जो होता है वो इनफोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनफोल्डिंग का मामला कहाँ पे दिया हुआ है? तो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इनफोल्डिंग ऑफ अ सेल शीट मतलब द शीट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म इन सी अर्चिन। सी एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो एग्जांपल मेंशन था वो ही डायरेक्टली उठा के यहाँ पे दे दिया। ये जो है ये गिलबर्ट से लिया गया है, और यहाँ पे गिलबर्ट से ही दिया गया है। तो गिलबर्ट एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा बुक है, वहां से ही जनरली सारे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So the next thing that would come over here, that is known as the involution. Okay, so involution के समय में हम लोगों ने देखा था ये जो सेल शीट था वो इंटरनली हो रहा था, सेल शीट का मूवमेंट जो है वो इंटरनली हो रहा था। इंटरनली मतलब इनवर्ड मूवमेंट हो रहा था। तो यहाँ पे इनवर्ड मूवमेंट, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस, ये देखो माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रायोज इंटीरियर। सो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बहुत ही जाना पहचाना प्रोसेस है, मतलब इनग्रेशन का प्रोसेस है। देखो इनग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स टू द एम्ब्रायो। सो इससे पता कर सकते हैं कि इनग्रेशन का प्रोसेस ये वाला होगा। उसके बाद इनफोल्डिंग का प्रोसेस तो इन्वेजिनेशन हो ही गया था। देन यहाँ पे दिया हुआ है इनवर्ड मूवमेंट of an expanding outer layer of cells so that it spreads over the internal surface of the remaining external cells. So ये बहुत आसान सा option that is given over here, that inward movement of the expanding layer, outer layer जो था उसका cells का internal movement हो गया and it spreads over the internal surface of the remaining external cell. अगर यही उल्टा दिया होता कि outer movement of the expanding outer layer of cells so such that it spreads around it, okay, around जो spread होता वो एपीबॉली होता, लेकिन इनवर्ड मूवमेंट जो इंटरनल स्प्रेड कर रहा है उसका ऑप्शन करेक्ट होगा इन्वोल्यूशन। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन इन्वोल्यूशन एंड एपीबॉली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आफ्टर आई हैव सेड द डिफरेंस बिटवीन इन्वोल्यूशन एंड एपीबॉली। ये बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। एपीबॉली में देखो वहां पे एपी है, एपी मतलब एक्सटर्नली, और इन्वोल्यूशन में इन है मतलब इंटरनली। इन्वोल्यूशन इंटरनली होता है और एपीबॉली एक्सटर्नली होता है, ई और आई। इससे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो ये बहुत ही एक ट्रिक मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए था। सो नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन में जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू नियरली पैरेलल शीट, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू नियरली पैरेलल शीट। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था डीलैमिनेशन में एक सेल लेयर का सेल शीट का स्प्लिटिंग हो रहा था, सेल का पूरा एक लेयर स्प्लिट हो रहा था। यहाँ पे इन्वेशन में
सेल स्प्लिट हो रहे हैं. सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस between ingression and delamination. Please understand the difference between ingression और delamination के बीच जो डिफरेंस है उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि इंग्रेशन अलग है, डिलैमिनेशन अलग है, इन्वोल्यूशन अलग है, एपिबोली अलग है. इन्वेजिनेशन थोड़ा हटके प्रोसेस है, वो सबको याद रहता है. जो जो डायग्राम्स यहाँ पे दिया जाता है, ये जो डायग्राम्स होते हैं ये जनरली इन्वोल्यूशन का ही पिक्चर दिया रहता है, और ब्लास्टोपोर के लिप से इन्वोल्यूशन प्रोसेस ही पहले ही और से स्टार्ट होता है, देन अदर प्रोसेसेस में फॉलो ऑन, बट द फर्स्ट प्रोसेस विच सेट्स इन इज द इन्वेजिनेशन. देन इन्वोल्यूशन जो है मैंने बोला टर्निंग इन ऑफ द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेल शीट. एपिबोली जो है एक्सपेंशन, मतलब बाहर की तरफ जो सेल शीट है वो चला जाए. इंग्रेशन जो है वो इंडिविजुअल सेल्स का माइग्रेशन है. डिलैमिनेशन जो है सेल शीट का माइग्रेशन है, सेल शीट का स्प्लिटिंग है. सो ऐसे ही चलता है. एंड रिमेंबर द एग्जांपल, इन्वेजिनेशन सी अर्चिन के एंडोडर्म में, इन्वोल्यूशन एम्फीबियन के मेसोडर्म में. इंग्रेशन जो होता है सी अर्चिन के ही मेसोडर्म में देखा, सी अर्चिन के एंडोडर्म में इन्वेजिनेशन देखा जाता है, और सी अर्चिन के एंडोडर्म में या सी अर्चिन के मेसोडर्म में इंग्रेशन देखा जाता है. देन ड्रोसोफिलिया के जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स होते हैं, यानी न्यूरोब्लास्ट सेल्स मतलब जो सेल्स का कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द ड्रोसोफिला रहता है, उनको हम लोग ड्रोसोफिला न्यूरोब्लास्ट सेल्स के नाम से जानते हैं. और ये न्यूरोब्लास्ट सेल्स जो होता है, ये ड्रोसोफिला के न्यूरोब्लास्ट सेल्स, ये जनरली माइग्रेट करते हैं इंडिविजुअली, दैट मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ इंग्रेशन. देन देयर कम्स डिलैमिनेशन, जो देखा जाता है मैमिलियन बर्ड हाइपोब्लास्ट लेयर फॉर्मेशन में. तो हाइपोब्लास्ट जनरली फॉर्म करता है किस लेयर से, जो लेयर यहाँ पे होता है उसको हम लोग एपीब्लास्ट के नाम से जानते हैं. एपीब्लास्ट से एक लेयर स्प्लिट करके अलग हो जाता है, उसको ही हम लोग हाइपोब्लास्ट के नाम से जानते हैं. और किस प्रोसेस से एपीब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन होता है, जो प्रोसेस है उसका नाम होता है डीलैमिनेशन. ये मैमिलियन एंड बर्ड हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन में देखा जाता है. और एपीबोली जो प्रोसेस है वो एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन एम्फीबियंस, जो एम्फीबियन का मतलब फ्रॉग या फिर जेनोपस का जो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है, बाहर की तरफ से शीट ऐसे इनफोल्ड कर जाता है, ये एपीबोली का प्रोसेस देखा जाता है. एक्टोडर्म का फॉर्मेशन जो सी अर्चिन में है वहां पे भी एपीबोली देखा जाता है, सी अर्चिन ट्यूनिकेट्स जो भी कहो तुम लोग. तो इन्वेजिनेशन जो है सी अर्चिन के एंडोडर्म में, मतलब सी अर्चिन के एंडोडर्म में इन्वेजिनेशन देखा जाता है, सी अर्चिन के मेसोडर्म में इंग्रेशन देखा जाता है, और सी अर्चिन के एक्टोडर्म फॉर्मेशन में एपीबोली का प्रोसेस देखा जाता है. सो प्लीज मैंने जो जो पॉइंट्स यहाँ पे बोला है उनको, आई होप दैट यू हैव जॉटेड दोज डाउन. इफ यू हैवंट जॉटेड डाउन, यू कैन, आई वुड बी अपलोडिंग दिस video in few days, or if not in few days, you will be getting the video tomorrow only, and you will be finding out that there is there. Okay, so just remember these points, इस points को ध्यान से समझने की कोशिश करना. तो ये हमने कर लिया है. इसका ऑप्शन जो है P होगा 2, देन Q होगा 4, R होगा, इंग्रेशन जो है 1 होगा, और S होगा 3. S होगा 3. यस. सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो यहाँ से C वाले से मैच करता है. सो ऑप्शन करेक्ट विच वुड बी द ऑप्शन नंबर C. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. सो let's just move to something different, that is intraspecific population interactions. Okay, so I am just deviating from developmental biology. developmental biology के अंदर सिर्फ यही क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं. अगर कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मुझे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में दिखे तो वी हैव मोर 9 क्लासेस टू डील. हम लोग उन क्लासेस में वो देख लेंगे अगर होगा तो, ठीक है. बट यहाँ पे जो जो चीज़ें तुम लोगों को बोला है उनको ज़्यादातर फोकस करो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है. यहाँ जो बोला गया है, जो दिया गया है, यहाँ पर से कुछ भी
आ सकता है। तो इंटरस्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरैक्शन में एक चीज होता है जिसका नाम है कि हाउ पॉपुलेशंस, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ स्पीसीज इंटरैक्ट्स विद अनदर, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज में एक स्पीसी और एक और स्पीसीज से कैसे इंटरैक्ट करता है, या फिर ये भी क्या कहा जा सकता है कि ये इंटरस्पेसिफिक है। अगर इंट्रास्पेसिफिक होता तो हम लोग ये कह सकते थे कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज में एक स्पीसीज कैसे दूसरे स्पीसीज से इंटरैक्ट करता है अपने खुद के पॉपुलेशन में, वो हो जाता है इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशंस में जनरली जो चीज देखा जाता है इंट्रास्पेसिफिक, वो होता है म्यूचुअलिज्म, मतलब म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप देखा जाता है जनरली। बट इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरैक्शन में एक और चीज भी देखा जा सकता है जिसको कहते हैं हम लोग कंपटीशन। कंपटीशन भी इंट्रास्पेसिफिक में इंक्लूडेड है, क्योंकि कंपीट कर सकता है फॉर फूड। अगर फूड का शॉर्टेज होता है एक जगह में, तो इंट्रास्पेसिफिक सिंगल पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज में भी कंपटीशन हो सकता है। ओके, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन बोला जाता है इस कंपटीशन को। तो वो कंपटीशन जो होता है वो खुद के स्पीसीज के अंदर होता है, एक स्पीसीज और एक और स्पीसीज से लड़ाई कर सकता है अगर रिसोर्स जो है वो बहुत कम हो। दूसरी बात हो सकती है कि अगर किसी मतलब सेक्स ओरिएंटेशन के लिए भी ये हो सकता है, मतलब कोई सिंगल मेटिंग पार्टनर हो रहा है, मेटिंग पार्टनर है और उस मेटिंग पार्टनर को ही मेट करना है, और उस मेटिंग पार्टनर के दावेदार वहां पे 4 या 5 स्पीसीज हो सकता है एक ही पॉपुलेशन में। तो वो लोग अपने आप के बीच में लड़ाई करेंगे और जो जीतेगा वो ही उस मेटिंग पार्टनर को डिसर्व करेगा। सो ऐसे कंपटीशन भी अराइज कर सकता है। सो ये गई बात इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटरस्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरैक्शन। दैट मीन्स हाउ अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ, you might be saying that is present in case of वो कुछ भी ले सकते हैं, एक लायन का पॉपुलेशन, एक टाइगर का पॉपुलेशन, दैट इज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज, हाउ दे आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। तो पहला जो टाइप ऑफ इंटरैक्शन है उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं। म्यूचुअलिज्म ये इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरैक्शन में भी देखा जाता है कि अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई वुड हेल्प यू। ओके, इफ यू गिव मी अ चॉकलेट आई वुड गिव यू if you give me a chocolate I will give you a packet of Lays. So in this way mutualism generally goes on. Then there is a process that is also seen in case of the intra-specific population interaction, that is known as the process of competition. So competition जो है, competition generally देखा जा सकता है किसके अंदर, वो जो कंपटीशन जनरली हुए वो कंपटीशन दो ऐसे स्पीसीज के बीच देखा जा सकता है जो लोग लड़ाई करना पसंद करते हैं। नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, लड़ाई करना कौन पसंद करता है, क्योंकि लड़ाई में जनरली जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग बोलोगे, मतलब इफ यू टॉक इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोलॉजी यू विल फाइंड आउट दैट इन नेचर नो वन लव्स कंपटीशन, बिकॉज हम लोगों को भी पता है कि हम लोग कंपटीशन पसंद ज़्यादा नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि सभी को ठीक ठाक से जो जिनका लाइफ में गोल है, लाइक यू ऑल माइट बी हैविंग अ गोल ऑफ डूइंग रिसर्च, ओके, सो वी एक्सपेक्ट दैट यस, और आई रादर एक्सपेक्ट दैट यस you should all get the opportunity to conduct research in the best of the universities possible. But yes, there are several means by which the number of students are cut down, and that indulges you all or all of us even in the process that is known as competition. So we have to face competition even we do not like that. In nature also the similar types of things takes place, that this competition sets in between two group of species. They might compete for food, they might compete for area,
दैट इज किसी को ये वाला एरिया पसंद है, किसी को वो वाला एरिया पसंद है, और दोनों को ही अगर एक एरिया पसंद हो जाएगा तो दोनों मारपीट करने लग जाएंगे। तो ये बात है, ये कंपटीशन। देन एक चीज आता है, और ये म्यूचुअलिज्म जो है, इसमें स्पीसीज ए या फिर स्पीसीज बी में पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है। कंपटीशन में दोनों का ही नुकसान है, ठीक है। स्पीसीज ए स्पीसीज बी का दोनों का ही गेन है, और कंपटीशन में स्पीसीज ए स्पीसीज बी दोनों का ही नुकसान है। दैट इज नेगेटिव नेगेटिव गिवन ओवर हियर, ओके। Then next one thing which comes over here, that is known as predator prey relationship. Predator और prey के बीच में जो interactions होता है वो generally prey को भारी पड़ता है, predator को बहुत लाभ होता है, क्योंकि predator तो prey को मतलब prey का hunting करता है वहाँ पे, ना hunting नहीं, शिकार करता है, ठीक है। यहाँ पे तो hunting, यहाँ बंदूक से hunting नहीं हो रहा है, तो प्रिडेशन करता है, ठीक है। तो ये प्रिडेशन जो है, प्रिडेशन का प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रे के ऊपर पड़ता है, और इस प्रिडेशन प्रेशर की वजह से ऐसा हो सकता है कि किसी एरिया में नंबर ऑफ प्रे का संख्या जो है वो कम हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जनरली, ये इकोलॉजिकली एक इम्बैलेंस का तरीका होता है, और उससे जो होगा प्रिडेटर का पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर जाएगा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्रे। सो देयर इज अ बैलेंस अगेन मेंटेन्ड ओवर हियर बाय द प्रोसेस विच इज नोन एज प्रिडेशन। एंड प्रिडेशन प्रेशर जितना इंक्रीज होगा, प्रे का संख्या तो कम ही होगा, प्रीडेटर का संख्या भी कम होता जाएगा। प्रे का संख्या जितना बढ़ेगा, प्रीडेटर का संख्या भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। देन देयर कम्स पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में एक ही बात होती है यहाँ पे कि पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप। पैरासाइट जो होता है वो होस्ट, यानी हम लोग किसी पैरासाइट का होस्ट हो सकते हैं। होस्ट मतलब जो पैरासाइट को एक एनवायरनमेंट देता है, माइक्रो एनवायरनमेंट देता है बचने के लिए। हमारे शरीर में बहुत सारे आ सकते हैं बाहर से। वायरस जो है वो एक पैरासाइट है, बैक्टीरिया जो है वो पैरासाइट है, फंगी जो है वो पैरासाइट है। ये पैरासाइट्स बाहर से आते हैं, आके हमारे शरीर में बहुत नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं। होस्ट का तो यानी हमारा तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, पैरासाइट का लाभ हो गया। पैरासाइट ने अपनी कॉलोनी को बहुत सारा हमारे अंदर विस्तार कर दिया, हमको मेडिसिन खरीदने जाना पड़ा। वो पैरासाइट का कोई लाभ नहीं है, लेकिन हमारा तो नुकसान है। तो ऐसे करके पैरासाइटिज्म का फेनोमेना देखा जाता है। तो म्यूचुअलिज्म जो प्रोसेस है, ये म्यूचुअलिज्म भी कुछ टाइप्स के बैक्टीरिया के या फिर कुछ टाइप्स के वायरस, यानी कि बैक्टीरियोफाज वायरस जो आप लोगों को पता है, उन वायरस के मदद से, या फिर कुछ टाइप के जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, उन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के मदद से हमारे गट में देखा जाता है ये म्यूचुअलिज्म का प्रोसेस, गट माइक्रोबायोम की मदद से, ओके। और एक और प्रोसेस, दो और प्रोसेस आते हैं लाइक कॉमेंशलिज्म एंड एमेंशलिज्म। कॉमेंशलिज्म में जो है स्पीसीज ए का तो बहुत सारा गेन होता है, लेकिन स्पीसीज बी का कोई गेन नहीं होता। एमेंशलिज्म में देखा जाता है कि स्पीसीज ए का मतलब नुकसान हो जाता है, स्पीसीज बी का अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा हो रहा है कि कॉमेंशलिज्म में एक तो चीज कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन एक का इंक्रीज हो रहा है, और एमेंशलिज्म में पूरा उल्टा हो रहा है, एक का तो कांस्टेंट रह रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब एमेंशलिज्म को हम लोग उस गाने से लिंक कर सकते हैं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है, राइट। मतलब तेरा घाटा हो रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है। तो एमेंशलिज्म इज अ प्रोसेस लाइक दैट ओनली, ओके। एंड कॉमेंशलिज्म इज समथिंग, मतलब यू आर गेनिंग एंड गेनिंग, बट मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स ये कुछ हम लोग एक लेबर कंपनी का जो ओनर है, मजदूर और मजदूर के जो कंपनीज होते हैं, छोटे छोटे कंपनीज होते हैं, उसका ओनर के भी, मजदूर तो डेली लेबर पुट कर रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है, लेकिन जो ज्यादा मुनाफा है वो मजदूर के कंपनी पे ही जा रहा है। तो ये प्रोसेस हम लोग रिलेट कर सकते हैं कॉमेंशलिज्म की मदद से। So this is basically the interspecific and intraspecific competition. I haven't put down the questions from this area, but yes, questions have come thrice from this area in the last 2-3 years probably. I would be posting the next questions in the next class, and we would be discussing about the questions related to this area. Now
थोड़ा हम लोग एनिमल बिहेवियर के बारे में जान के आज के क्लास को टर्मिनेट करेंगे। और ये एनिमल बिहेवियर का जो प्रोसेस है, ये एनिमल बिहेवियर के प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स के बिहेवियरल पैटर्न को हम लोग स्टडी करते हैं। और ये स्टडी को एक और नाम से आजकल के दिन में जानते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं इथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी नॉट इकोलॉजी, इथोलॉजी नॉट इटियोलॉजी एज वेल, इट्स इथोलॉजी। इथोलॉजी बिहेवियरल स्टडी और एनिमल बिहेवियर। ओके, सो एनिमल बिहेवियर में दो टाइप के बिहेवियर हो सकते हैं। एक को हम लोग इनेट बिहेवियर के नाम से जानते हैं, दूसरे का हम लोग लर्न बिहेवियर के नाम से जानते हैं। इनेट बिहेवियर में जो बिहेवियर होता है वो एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से डायरेक्टली इनहेरिट करता है। लेकिन लर्न बिहेवियर में जो बिहेवियर है वो पॉपुलेशन में कुछ स्पीसीज के बीच में देखा जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन के किसी स्पीसीज में देखा जाता है। सम स्पीसीज माइट शो दैट टाइप ऑफ बिहेवियर एंड अदर स्पीसीज माइट नॉट. It is generally transmitted inside a population. It is spread generally inside a population. Next, what is over here, that is passes from one generation to the next in case of innate behavior. Innate behavior में one generation से दूसरे generation में पास ऑन होता है बिहेवियर. ठीक है, जैसे रिले रेस में तुम लोगों ने देखा है ना कि एक बैटा जो है एक आदमी ने दूसरे आदमी को दिया, वो रन करके फिर से एक आदमी को देता है और वो रन करके फिर से एक को देता है, वो लाइन क्रॉस करता है 4x100 मीटर का जो रिले रेस बैटन रेस जिसको बोलते हैं. वैसे ही इनेट बिहेवियर भी एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को पास ऑन करता जाता है. लर्न बिहेवियर कैन बी पास्ड विद इन अ सिंगल जनरेशन. एक ही सिंगल जनरेशन के अंदर पास होता है, मतलब जो बर्थ हो चुका है उसके बाद देख के सीखना. ठीक है, हम लोग तो सभी लोग जो होते हैं वो कुछ लोग आते हैं टैलेंट को अपने आप से लेकर. पृथ्वी में होते हैं ना बहुत सारे लोग हैं, नोबेल लॉरिएट्स जो है होते हैं, वो टैलेंट को पृथ्वी में लाके उन लोगों का जन्म हुआ. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नोबेल लॉरिएट्स ऐसे भी है जिन्होंने टैलेंट को अपने लाइफ टाइम में गेन किया है, वो लर्न बिहेवियर की मदद से. लेकिन जो लोगों का टैलेंट फ्रॉम इंटरनली फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर बर्थ होता है, उनको हम लोग इनेट बिहेवियर के नाम से जान सकते हैं. डेवलप्स एट अ स्लो पेस वाया नेचुरल सिलेक्शन. इनेट बिहेवियर स्लो पेस में डेवलप करता है, किसी जनरेशन में डेवलप कर गया तो वो इनहेरिट कर, मतलब जर्म सेल का पार्ट हो जाएगा. जर्म सेल जो है वो लगातार जनरेशन वाइज जनरेशन वो उस पैटर्न को फॉलो अप करता रहेगा. और लर्न बिहेवियर जो है बहुत जल्दी डेवलप करता है, मतलब टैलेंट अगर आना होगा तो वो आ जाएगा, 2-3-4 सालों में आ जाएगा. ठीक है, ऐसा हो ही सकता है कि तुम लोगों में किसी ने कुछ एक दिन नोबेल प्राइज जीत ली. ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हो सकता है तुम लोगों ने तुम लोगों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इनबॉर्न टैलेंट के भागीदार हैं. ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं जो 2-3 साल में सीख जाते हैं. सो दे आर लर्न बिहेवियर. जो टैलेंट लेकर रहा है वो इनेट बिहेवियर शो कर रहा है. ट्रेट्स आर डेवलपमेंटली फिक्स्ड. ट्रेट्स जो है फिक्स्ड होता है, ठीक है, डिफर्ट नहीं करता. लेकिन लर्न बिहेवियर में ट्रेट्स कैन बी एक्वायर्ड एंड और फॉरगॉटेड. एक्वायर किया जा सकता है और भूल भी जा सकते हैं. अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो यूज नहीं कर रहे, भूल जा रहे. साइकिलिंग जैसा एक चीज है, अगर बहुत दिनों के देर के बाद अगर हम लोग साइकिलिंग करें तो हम लोगों को याद रहता है अरे ऐसे साइकिलिंग किया जाता है. लेकिन अगर तुम लोग सोचो एक चिकन का रेसिपी प्रिपेयर कर रहे हो, वो बहुत दिनों से तुम लोगों ने नहीं किया क्योंकि तुम जो इस जगह पे रह रहे हो वो जगह वेजिटेरियन एरिया है, लेकिन तुम जनरली नॉन वेज हो. ठीक है, हो सकता है तो बहुत दिनों से नॉन वेज खाना नहीं खाया और तुम ना खाते भूल ही गए कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है. सो दैट इज ऑल टाइप ऑफ बिहेवियर दैट इज फॉरगॉटेन. ओके,
सो एक्वायर भी कर सकते हो, फॉरगॉट भी कर सकते हो, ये लर्न बिहेवियर का पार्ट है. इनेट बिहेवियर इज जस्ट लाइक स्विमिंग, साइक्लिंग, राइडिंग, एनी or driving, anything. Okay, so this is basically the difference between innate behavior and learned behavior. Another thing which I'd like to discuss today in the class, that is FAP. FAP is a part of our innate behavior that is seen in generally in case of different types of organisms, and that is also known as a fixed action pattern. And basically it is an instinctive behavior and it is highly a type of a stereotyped behavior. मतलब इस बिहेवियर में ज्यादातर कुछ चेंजेस नहीं आते. स्टीरियोटाइप मतलब 600 साल पहले भी जो था वो आज भी है, ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप. ठीक है, स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर. और ये स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट हो जाता है. मतलब ये स्पीसीज ऐसा बिहेवियर शो करेगा, जो फैप शो करते हैं वो फैप शो करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए. So fixed action pattern is an ethological term describing an instinctive behavioral sequence that is highly stereotyped and species characteristic. Fixed action patterns are said to be produced by innate releasing mechanism. तो यहाँ पे जो होता है कि innate releasing mechanism नाम का IRM ये इसका एब्रिविएशन है. और ये जो रिलीजिंग मैकेनिज्म है, इस रिलीजिंग मैकेनिज्म के मदद से फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का शुरुआत जनरली होता है. So fixed action patterns are said to be produced by innate releasing mechanism, which is a hardwired neural network in response to a key stimulus or releaser. Okay, एक key stimulus या फिर रिलीजर जो होता है, मतलब स्टिमुलस जो प्रोड्यूस करता है उसको रिलीजर कहा जाता है. तो उस स्टिमुलस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ साइन और अ की, और ये स्टिमुलस जो है एक हार्ड वायर्ड न्यूरल नेटवर्क के मदद से फॉर्म करता है. ठीक है, सो इस प्रोसेस को इन जनरल हम लोग फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के नाम से जानते हैं. सो ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जनरली ग्रे लैग गूज नाम की एक बर्ड जो है उस बर्ड में देखा जाता है. उसका बिल जो है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, लेकिन यस उसका बिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ये देखा जाता है, इट इज सीन ओवर हियर, व्हेनेवर दिस ग्रे लैग गूज lays its eggs, it generally protects it and gives it a period of incubation under it. Okay, यहाँ पे देखो इसके नेस्ट जो है उसके ऊपर ये बैठता है, जैसे सारे बर्ड्स ही ऐसे करते हैं. लेकिन ये देखा जाता है समटाइम्स इट हैपेंस जब होता है कि ये बर्ड जो है वो खड़ा होता है, ये हो सकता है यहाँ से एक एग रोल आउट हो जाए बाहर. वो उसके बाद जो करता है, इसका बिल जो है, इस बिल की मदद से देखो इस एग को इनसाइड में रिट्रीव कर रहा है. तो इस बिहेवियर को एक और नाम से जाना जाता है कि रिट्रीवल बिहेवियर. सो इस एग को ये रिट्रीव कर रहा है. ठीक है, इस एग को रिट्रीव कर रहा है, इट इज रिट्रीविंग द एग. बट इट हैपेंस दैट इफ an egg is taken out from this nest and it is replaced by a ball and it is just given outside, this bird would show the similar behavior. ये इस egg को फिर से अपने बिल से अंदर खींच लेगा. यहाँ पे egg नहीं है, यहाँ पे बॉल है, बॉल को भी अंदर खींच लेगा. अगर बॉल को भी ना दिया गया हो, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सोच लो egg भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक उठा लिया गया है और उसको पता है कि एक यहाँ से मिसिंग है और एक को रिमूव कर दिया गया है, फिर भी ये बिहेवियर शो करता जाएगा. मतलब कुछ भी नहीं है लेकिन ये बिहेवियर शो करेगा. अगर एक के अलावा कोई और गोल ऑब्जेक्ट वहां पे रख दिया गया तो भी ये बिहेवियर शो करेगा. अगर एक खुद ही है तो वो शो करेगा ही करेगा. तो इस पैटर्न, ये जो पैटर्न है, इसको हम लोग फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के नाम से जानते हैं. ये स्टीरियोटाइप है, मतलब एक बार ये जेनरेशन के बाद जेनरेशन फिक्स रहता है. और इसके अलावा एक बार अगर ये प्रोसेस शुरू हो गया, मतलब इफ दिस प्रोसेस स्टार्ट्स वंस, देन दिस प्रोसेस वुड एंड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन. कंप्लीशन जितनी देर तक नहीं हो रहा है इस प्रोसेस का, ये जो बर्ड है ये नहीं रुकता. ये प्रोसेस कंप्लीट करके फिर ही रुक जाता है. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग जो एग रिट्रीवल बिहेवियर बाय द ग्रे लैग गूज, इस प्रोसेस के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की
एक बहुत 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 क्लासिकल एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको याद रखते हैं, तो तुम भी ये याद रखना। सो एक क्वेश्चन आया था, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज द एग रिट्रीवल बिहेवियर। सो एग रिट्रीवल बिहेवियर पढ़ लिया है तुम लोगों ने, ये एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, ठीक है। सो ये ही चलता रहता है। सो विद दिस I would like to end today's class, and I hope it was understandable to you all. So अगर किसी का किसी एरिया में कोई डाउट है तो तुम लोग माइक ऑन करके या फिर कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर किसी का कोई डाउट होगा। If you do not have any kind of